पढ़ ले। ईसाइयों के लिए सहूलत नहीं, वो अपने तरीक़ पर करते हैं। एक मुसलमान अपने तरीक़ पर नमाज़ पढ़ता है, मुख्तलिफ़ मुसलमानों के फ़िरक़े जो हैं वो बिल्कुल ज़ैली फ़र्क के साथ। Next one also. His आ, practice is only confined to his practice is only confined to prayers, or it is more than that. Some rituals are also involved. इस्लाम में तो नमाज और रोज़ा और ज़कात और हज और कलमा शहादत का ऐलान जो है, इसके अलावा ईद है। ईद जो है वो हमारी इसका अपना एक बड़ा अजीम, बड़ा गहरा, बड़ा अमीक और बड़ा फ़लसफ़ा है। इसमें जाने की ज़रूरत नहीं। वो ईदैन हैं दो, कुर्बानियों के बाद वो आती हैं। बड़े सबक हैं हमारे लिए। इसके अलावा हक़ुक़ुल इबाद की अदायगी है। मैंने तो नहीं गिने, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि 700 अहकाम कुरान पाक में पाए जाते हैं, और अगर इनकी शराइत पूरी हों तो 700 के 700 अहकाम की पाबंदी करना इंसान के लिए लाजमी है। इसका आम जो हमारा इस्तेमाल है रिचुअल के लफ्ज़ का, यानी मैं सीख रहा हूँ आपसे। मैं सीख रहा हूँ. I ask you. मैंने नहीं पढ़ा कि वो रिचुअल का लफ्ज़ इनके ऊपर इस्तेमाल हो रहा हो, जो मुसलमान हो ईदैन के ऊपर हो जाता है। यानी वो मैं कहता हूँ मेरे दिमाग में इंडियन अथॉरिटीज हैं कुछ, हाँ वहाँ जो ईद पर बकरीद पर गाय की कुर्बानी करते थे, एंड यू मे हैव सीन दोज केसेस. हाँ 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 और वहाँ उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट बनाया हुआ है कि गाय को ज़िबा नहीं करते. हाँ तो क्या मजहब की हाँ प्रैक्टिस में दाखिल है या नहीं? हाँ जी, ठीक है। जो ये हमारी हैं ईदैन, हमारे अहकाम दो किस्म के हैं, एक जिनका करना ज़रूरी है, एक वो जिनका करना जायज़ है। जो जायज़ हैं और ज़रूरी नहीं, अगर इनके ख़िलाफ़ कोई कानून बन जाता है किसी मुल्क में दुनिया के, तो आदमी गुनहगार नहीं होता। नहीं, फंडामेंटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंडेशनल राइट्स, it is granted in the Indian constitution in similar terms more or less. जब मज़हब ने इजाज़त दे दी तो ये जो हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो इसकी कैसे मुखालफत कैसे करेंगे? वो तो उन्होंने की. नहीं नहीं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, Fundamental right says you can practice your religion in all the world. रिलीजन कहता है कि तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है गाय को ज़िबा करना। देयर इज़ नो क्लैश इन दिस केस, इन द एग्जांपल यू गिवन हियर। हमारा मज़हब इस्लाम ये नहीं कहता कि गाय को ज़रूर ज़िबा करना। अभी अगर एक आदमी के पास सिर्फ गाय है बकरीद पे और वो बेचारा इसको कुर्बान करना चाहता है, और हमारा मज़हब ये भी नहीं कहता कि हर आदमी कुर्बानी करे दे। नहीं, वो कहता है कि मेरे पास पैसे वैसे हैं और गायें भी मेरे पास है, और मैं. अगर इसके पास पैसे वैसे हैं तो वो फिर जाकर दुम्बा खरीदे, मोटा सा चक्की वाला। और ये बताइए कि इज दिस नॉट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन? कोई हम्म इंटरफेरेंस नहीं होगा आपके साथ अगर. जहाँ जवाज़ है वो जवाब नहीं, वो वजूब नहीं। जहाँ जवाज़ है वजूब नहीं, वहाँ नहीं होगा। और अगर कसाई कहें जी कि हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड पर भी इफेक्ट पड़ा है, वो भी नहीं होगा. अगर किसाई ये कहे कि मैं सिवाय गाय, मैं गाय का गोश्त बेचता हूँ, मेरी. मैं सिर्फ गाय का गोश्त बेचता हूँ, और बकरी का गोश्त मैं बेच ही नहीं सकता। हाँ, मैं बेचता हूँ, मेरा बाप दादा से यही प्रोफेशन रहा है. नहीं, वो प्रोफेशन जो है वो कोई फ़र्क नहीं है। ना, नहीं. तोहमात की दुनिया में आप इजाजत देते हैं कि द स्टेट शुड इंटरफेयर इन दिस मैटर? इट इज़ नॉट इंटरफेरेंस इन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, इस वास्ते के कि वो बग़ैर किसी नुकसान के गोश्त बेच सकता है। आप लेते हैं कि प्रोफेशन है,
जो ट्रेड है गोश्त बेचने की, आपने उसकी तारीफ ये की, गाय का गोश्त बेचना। ये और मैं तारीफ ये करता हूँ गोश्त बेचना, चाहे वो गाय का हो चाहे बकरी का हो। the constitution says any lawful profession or trade. Now this was lawful when the fundamental rights came into existence. Then the law was promulgated after that. Then it was not lawful after the promulgation of the law. The law as Article 8 or Article 8 says similar, the Indian parallel article says corresponding article. मुझे ये The any law which is conflict with. मैं बड़ा जाहिल आदमी हूँ, मुझे आपकी ये दलील बहरहाल आप समझ नहीं आई। समझते हैं कि ये लॉ ठीक है, इस पर कोई इतराज नहीं होना चाहिए। जहाँ जवाज है वहाँ ठीक है, जहाँ अच्छा जी। वजूब है वहाँ नहीं। मसलन अगर कोई कानून ये बना दे कि 5 शादियाँ ज़रूर करो, ये इसी पर मैं आ रहा हूँ। नहीं वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो फिर क्लैश हो गया। नहीं, अगर कानून नहीं, इनका मजहब ये कहे जैसे मॉर्मन्स का। नहीं नहीं, मैंने आपको अर्ज किया हाँ, कि अमेरिका में मॉर्मन्स में दिस इज नॉट ओनली अलाउड बट let them solve their problems, let us solve ours. sir, we are concerned with the freedom of religion all over the world. You have got Ahmadis there also, you have to worry about their welfare. नहीं नहीं, हमारे अहमदी जो हैं नो नो, और जो ईसाई हैं उनका वहाँ कोई क्लैश नहीं, नहीं नहीं, मैं जनरली कहता हूँ वी आर, और ना दूसरे मुसलमानों का। you have relief on declaration of human right because Universal Declaration of Human Rights does not clash with the Mormons to my mind. no, a Mormon says that this is the obligatory or me, my religion enjoins it that if circumstances permit, और साथ ये भी कहता है प्रैक्टिस कर लीजिए कि मेरा फ़र्ज़ पूरा हो जाता है कि अगर मैं छुप के कोई औरत रख लूँ, शादी करके छुपा के कानून से। साथ वो ये भी कहता है, मैंने पढ़ी हैं उनकी किताबें और यही उनकी प्रैक्टिस है। यानी मोर्मन्स जो हैं, अगर वो कहते हैं कि मिर्जा साहब। दूसरी शादी का ऐलान करना ज़रूरी है, तो क्लैश हो जाता। मिर्जा साहब, मैं पूछता हूँ, जब स्टेट्स में एक आदमी रेलर था, उसने 2 शादियां कर ली बदबख्ती से, and he said that I belong to Mormon church and it is obligatory. उसने बात छुपाई नहीं, it is obligatory and this is part of my religion and be produced the authority. I have read their books. And the court said we send you to jail for 5 years or 7 years for bigamy, for disrupting our society. We do not accept this much freedom of religion, so the state could interfere. The state commits one type of blunder, that gentleman commits another type of blunder. Now I take another extreme example, sir. Supposing a Hindu lady, Noshki or the Barker in Pakistan says that she want to observe their old Hindu law, Sati, and wants to burn herself with her dead husband. I do not know any such law of sati in Hindu Mazhab. No, but supposing that way, But there is no such law. they used to practice this. नहीं, आप मिसाल कैसे दे सकते हैं जो चीज़ अभी, ये होता है कि नहीं? लेकिन वो मज़हब के मुताबिक नहीं होता रहा, रवायात के मुताबिक होता रहा है। हिंदू मत तो सारा रवायात है, उनका मजहब है क्या? But they call it religion. Why don't we
But no, you cannot deny that. राइट, आप इस्लाम की मिसाल दें। I'm just saying, supposing. नहीं, हम ये तो सपोजिशन हमारी बहुत दूर चली गई। नहीं, मैं तो जब फिर आपसे और सवाल पूछूंगा हाँ हाँ, पूछिए। मैं ताकि पोजीशन क्लैरिफाई हो। हाँ हाँ साहब, मैं तो जवाब देता रहूँगा जो मेरी अकल और समझ के मुताबिक हो। आपने फरमाया कि एनीबॉडी हैज द राइट टू चूज हिज रिलीजन। जी बिल्कुल। नाउ बाय चूज you mean to select one of the religions already existing, or you can found and start a new religion also. Freedom of religion. जी, ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स है, इसमें रिलीजन के अंदर उन्होंने एथिज्म भी रखा है। Hmm. One second. So he can start a new religion also, a person. एथिज्म मैंने बताया है ना, उन्होंने खुद उसे उस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ये चाइना ने जो फ्रीडम, मुझे सही याद नहीं, लेकिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में एथिज्म बतौर रिलीजन के उन्होंने। No, sir, but I say that a new religion could be started by a person. A sect of atheism, yes. No, but they may not say atheism. They may say a new sect of Christians. For instance, they say there are 100, 200, and 3 sects, Christian sects in America only. I thought we were talking religion. Yes, Now I find that we are talking of sects in a religion. sects. हाँ हाँ, sects जो हैं वो हर एक में there are hundreds, thousands, one schools of. Supposing somebody starts a new sect in a religion, हाँ ठीक है। he has also the freedom. हाँ बिल्कुल, मसलन मैं आपको मिसाल दे दूँ ताकि मेरी बात वाज़ेह हो जाए। ठीक है। एक शख्स ये ऐलान करता है खड़े होके कि मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता, कि देवबंदी मज़हब जो है उसमें ये चीज़ें उन्होंने रखा हुआ है, मैं इस अकीदे को छोड़ के और बाकी बातों में देवबंदी हूँ, तो नया सेक्ट बन गया। अगर वो एक बात भी छोड़ दें तो नया सेक्ट बन गया। Now, sir, I'm taking. इसकी मेरे ख्याल में इजाज़त होनी चाहिए। Now, sir, I have taken the extreme example that supposing a sir of Hindu in Pakistan, we have got a lot of happiness these Crop days. of hippies. Syrup of hippies in Pakistan, sorry. We have got a lot of hippies these days. Are they human? Of course, I hope you will not deny them that right. I did in England, and These hippies, they accepted my version. these hippies declare, announce, proclaim that they are Christians of hippie sect, and then they further announce. Have they been punished for this? No, but I'm asking a further question when I come to their rituals. Supposing they further say that the marriage is not an institution एक मिनट, with the, दो सवाल रह गए। Nobody can punish them और रह गए। Have they been punished see, for this? nobody can punish them. Then the question is quite clear. No, but I'm asking a further question when I come to their rituals. Supposing they further says that marriage is not an institution with divine sanction. Christ never married. Therefore, all sex relations are permissible, all sort of them, one declaration. Then they further declare that man was born naked and he has the right to go about naked everywhere. That is the second declaration.
Now this is the religion. Thirdly, they say that human sacrifice, ritual feelings is good for human. Is that a problem for Pakistan? No, sir. I'm just taking a proposition that if they declare this is our religion and we call ourselves Christians and they practice is them we have come to practice. They start going about naked in the street. Do you think that the state should interfere? Subject to morality. So you agree that? Subject to morality? Yes, I agree. And they cannot kill either subject to morality or subject to public order? Yes, So you agree that there are restrictions on free of religion? there are restrictions and they should be very wisely complied with. And those restrictions have to be judged by By the competent authority. competent authority. That is, they will make a law and the court will carry out public morality. By the competent authority. Yes, by the competent authority. I do not want to ask you for the question because you mean legislature and courts. One will make the law and the other will interrupt. By competent authority, I do mean competent authority. And you do not want to define it any further, I need not. and you don't mean. It is quite clear. So, yes, so this freedom of religion is subject to law. The law cannot say that in spite of the fact that a particular group of people. अच्छा, यहाँ मैं वजाहत कर दूँ। इखलाक जो है ना, पब्लिक मोरालिटी, इसको दो मानों में हम इस्तेमाल करते हैं। एक मजहबी माना में, मसलन असलम ने बड़ा तफसीली कोड ऑफ मोरालिटी हमें दिया है, और एक असलम है, इस्लाम असलम होगा, और एक वो मोरालिटी है जो इंसान की फितरत के अंदर है, इन द वेरी नेचर ऑफ मैन। वो खुदा ताला ने इसको दी है, जिसके ऊपर मसलन वो कौमें भी अमल कर रही हैं जो खुदा ताला पर ईमान ही नहीं लाएं, लेकिन इनकी फितरत के अंदर ये है कि ये मोरालिटी है, ये अखलाक नहीं, हमें इनको नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी मोटी मिसाल चीन की है। चेयरमैन माउजे तंग ने एक जगह लिखा है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो तलबा जो हमारी तालीमी इदारों में पढ़ के बाहर निकलें पूरी तरह बाइखलाक हों। तो वो बाइखलाक हों का ये मतलब तो नहीं कि जो इस्लाम ने अखलाक पेश किए हैं उसके मुताबिक बाइखलाक इंसान के सामने पेश किए हैं, इनके सामने बाइखलाक हों। तो ये जो इससे भी नीचे गिरता है वो तो फिर मजाक है, सब्जेक्ट टू मोरालिटी का। Mr. Yahya? Okay, subject to morality, but the concept of morality changes from time to time, from area to area, and from place to place. Yeah. As far as a non-religious type of morality is concerned, you are right. As far as Islam is concerned, the fundamental truths and realities of morality do not change ever. No, but if a person does not observe parda or goes about semi-naked, do you call it immoral? In some cases, it will not be considered immoral. Why call it immoral? Call it against the laws of Quran. You call everything against the law of Quran? No? I call everything against the law of Quran when we find a law in Quran about it. No, but Not otherwise. if a person is a Christian and he says that it is my right, I am not Muslim. He has got every right. You cannot interfere.
he can go about naked? Not naked, without parda? Why not? हाँ. Why not? If you say the man is born free, man is born naked, why wear clothes? Because it is against the rights of other people. Exactly. That means that you can exercise your freedom of religion so long as you do not affect the other or deprive others of their rights. Quite, Thank you. quite. Now, sir, if this sect of hippies who call themselves Christians, Is it a fact? I'm just giving you ridiculous example. मैं आपको बताऊं 1970 में मैंने दौरा किया था वेस्ट अफ्रीका का, यूरोप का भी। वहाँ मुझसे ये सवाल उन्होंने किया कि हिप्पीज़ के मुतालिक आपकी क्या राय है। मैंने इन्हें कहा कि मेरे नज़दीक तो इंसानों की सी ज़िंदगी वो नहीं गुजारते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनसे नफ़रत करता हूँ या हकारत की निगाह से देखता हूँ। मुझे उन पर रहम आता है और मैं दुआ करता हूँ कि वो इंसानी इक़दार को समझने लगें। हमारी बुनियादी चीज़ जो इस्लाम ने हमें सिखाई है, वो ये है कि इंसान को पहले इंसानी इक़दार सीखनी चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए, तब रूहानी तरक्कियात का सवाल पैदा होता है। Now, sir, all these examples were simply meant to show that freedom of religion as given is subject to restrictions, and it may be law. All I was submitting was that the freedom of religion point is subjected to restrictions, which could be made by law, imposed by law. That was all I was saying. Very carefully and extremely rationally applied. Rationality? Yeah. Yes. Naturally, because we presume the law is rational, we presume the courts are working honestly and properly. That presumption is here. And we hope that those who execute these laws are also very honest and rational. Yes, rational and honest. That is presumed. Now, sir, you have seen the Constitution of Pakistan in the preamble of the Constitution. The title it is called the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. That shows time away. So judge to judge. Then in the preamble, it is started among other things by that, where in the Muslims all shall be enabled to order their lives in the individuals and collective sphere in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. And as they believe, Naturally, every sect is free. every sect is free. Every sect as they believe, no, but that shows, in that religion is part of duty imposed on the legislature to see the Muslims. That all sects of Muslims, All sects. I am not excluding anybody. I am not excluding you. I am not excluding. You need to jump to a conclusion that I am excluding you. I'm sorry. The point is simple. Where in the Muslims shall be able to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of them, so that the means that the legislative
will see it that will see to it that it frames laws which require the Muslims to live their lives in accordance with the requirements of Quran and Sunnah as interpreted by different sects. हाँ, as interpreted. Interpreted, yes. That means there is a duty imposed on the legislature to make laws in religion matters. That is my first question. We should not generalize. No, I'm just asking that because they have to make laws to see it that they their lives in accordance with the injunctions of Islam. इसका मतलब ये है कि I won't say that because Allah is made by a Sunni. no, I shouldn't be enforced on a Shia. इसमें कोई झगड़ा ही नहीं आपस में, वो झगड़ा नहीं मेरे जहन में इस वक्त। इसका मतलब ये है कि हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि अगर जमात अहमदिया ये समझती है कि कुरानी तालीम के मुताबिक कब्रों पर चढ़ावे नहीं चढ़ाने चाहिए, Uh, I am not suggesting this. नहीं तो उनका फ़र्ज़ है कि वो देखें कि जमात अहमदिया कब्रों पर चढ़ावे नहीं चढ़ाती। No, nahi. ठीक है, ये ठीक है। That is what I say, but they can make laws. I am only concerned with the principle that legislature and the parliament can make laws on this subject. Second things is, sir, In the light of the fundamental beliefs Mr. See, yes, of every sect. you are going, sir, in detail, but sir, I'm saying in principle, you give this power to the legislature. मैं इसलिए डिटेल में जा रहा हूँ कि ये ना हो कि कल को आप हम डिटेल्स भूल जाएं, हम डिटेल्स भी भूल जाएंगे, हम ब्रेक लेना भी भूल जाएंगे। खुदा के लिए या बख्तियार वो ब्रेक ले लो। नहीं जी नहीं. You can explain and add to anything which you say in answer to my question. I'm not नहीं ठीक है। suggesting that, but I am just saying that in principle this is a duty imposed by the constitution. ये माइक काम नहीं कर रहा शायद, The other one, या मर्जी नहीं काम कर रही, यहाँ नुकसान नहीं है। ठीक है जी। I'm just submitting that in principle the constitution has imposed a duty on the National Assembly, on the Parliament, that they should see it by making laws that the Muslims live their lives in accordance with the injunctions of Quran and Sunnah. That Ahmadis live their lives in accordance with their interpretation, Yes, and Wahhabis live their lives in accordance with their interpretation, yes, and Braillevi, yes, I'm only asking huh, that the legislature can do it. with that detail, Yes. I quite agree with it. Now, sir, the next provision of the Constitution, to which I respectfully draw your attention, is Article 2 of the Constitution. Yes, They, it says Islam shall be the state religion of Pakistan. this is preamble. No, this is Article 2. This is not preamble. दिखाओ, अपने वक्त के रुकन से कह रहा हूँ, दिखाओ कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ। Constitution दे दीजिए.
अपने वक्त के रुकन से कह रहा हूँ आर्टिकल 2 निकालना. This is introduction, yes. This is Article 2. हाँ, in the introduction, very wise. And if you could kindly tell us what are the implications of this? What does it mean? It is quite clear Islam is the religion of the state. It means that in our constitution, politics and religion are not kept separately. We are not secular state and that I don't know, to my mind, it means that the takes politics takes on it the responsibility to guard the interest of religion, yes, exactly, because of the difference. because something different, and it is not the mixture of the two. That under the American Constitution it is provided that the state shall not establish any religion or any other or another. It will not side with one sect or another. It will be absolutely neutral in religious matters, but They also mean that state will not side with one religion or the other. no, but here, It only says on the opposite side, that the politics of this country takes upon itself the responsibility to safeguard the interest of Islam. yes, that is why I say, It does not say that we would not be partial to these who do not believe in Islam. no, no, I'm not saying that. No, that is their fundamental right. No, no, it not in the least, not as far the non-Muslims are concerned. That clears the matter now. As far as the Muslims are concerned, it will encourage them to see that they live their lives in accordance with the injunctions of Islam. They say their prayers, they don't drink, they pay their zakat, things like that. Then, sir, there is further provision in the Constitution, Article 41 and Article 91, That is, that require that the President and the Prime Minister shall be Muslims. that is not the fundamental No, no, this is part of Constitution. under the headings. That this is not a directly part, but obligatory part, Obligatory part? because preamble is not enforceable. Huh. But this part, This is enforceable. enforceable part. This is after the principles of policy. Yes. Now, so I'm going again to give that example. Supposing somebody, a very important man, a very popular man in our country, but not Muslim, he files a declaration that I am a Muslim and I want to contest an election. Can anybody question that? He could neither be pious nor great. If he is not a Muslim, No, is he
Yes, that is what I say. So, for a person who formally declares that he is a Muslim when he denies one of the fundamental of Islam or two fundamentals of Islam, openly denies, and still he says that he is a Muslim, Then the government should go to the court. the government is interested that he should be elected. He is popular. I say, can anybody go to the court and say no? Well, I personally condemn that government. Government, I I don't know about the others. government is not the member of the assembly we elect. Government is nobody in the assembly. No? It is the members of the assembly who elect. Government is nobody in the assembly. No? You use the word government. That is why I repeated that. No, no, You change the word and I will change the word. because you have been saying again and again the government. I think you meant legislature. No. No, whoever is the authority concerned. Yes. Whichever is the proper authority. Supposing he thinks he is a popular man, he is a nice man, he is a man of character, he is religious, beliefs are somehow fair, but he does not believe in zakat or jihad or something, but we are not concerned. He says he is not a Muslim, but he openly says, no, I don't accept zakat as part of Islam, and I don't think it is necessary. They should not support him. No, but supposing they support him, can that he question, Huh. Huh? or his declaration is enough under the law? I'm speaking of law. Is there a provision in this constitution that when such a thing is suspected, it should be settled by a court, or if it is not there, then who is going to decide? Suppose there is one member of this august house who says that the declaration is false. No. Are members from the opposition, you know? Yes, member of the opposition can tell the chief election commissioner when form is filed. And this word is final, and his word is final. No, his word is final as far as they are concerned. But if this objection is raised by the person that this man is not Muslim, can, on the basis of your argument, the candidate say that it is none of your business? What is the basis? Why? Declaration is the final word. What is the basis of existing law? I must know that before I. Chief election commissioner can see, but the conduct Is it the election commissioner? of the president cannot be questioned in the court of law. Is it the election commissioner who decides? Yes. In such cases, mm, Uh, yes, he scrutinize the form. He has to see to it. that whether he is qualified for presidentship, Yes, and he is to take oath before him. that he is qualified or not. Oath is taken later, but he has to file the form before him that he is a Muslim, because Uh, has he got the right to question that oath? their scrutiny takes place. No, he takes. Has he got the right? No, but I'm asking you, supposing somebody, No. I must know the law before I can yes, answer the question.
Supposing some Christian files a form, and the Chief Election Commissioner can throw it out and say, no, only Muslims can do it. no. For the presidentship of Prime Minister or the Prime Ministership, Supposing a Christian is faithful to himself and does it, no, then he takes the oath before the election commissioner. no, no, The election commissioner has the right to refuse to take his oath or not. no. I'm not talking of oath yet. Then comes after the election, I am at the stage of filing nomination papers. When the nomination papers are filed, the Chief Election Commissioner will look at him. The first thing he is to see is that the paper carried a certificate that a person is 45 years old. If a person is 30 years old, the Chief Election Commissioner will say, well, I am sorry, you are not qualified Huh. because the Constitution says. Huh, underage. So I say he is the authority on the spot to say that your papers are rejected. But can he reject? Can he reject his papers on the assumption that his declaration as a Muslim is incorrect? Now I'm saying that on the assumption he cannot do it, but supposing the objection is raised, Who is going to decide? he That election commissioner, whether he is a Muslim or not? no sir, I'm asking you if somebody objects that. Well, I'm very sorry. I cannot. I find myself just incapable of. No, but if you kindly hear for a minute, अल्लाह के वास्ते ब्रेक दे दो या बख्तियार. ये पेज तो मज़ा पूरा तो करे ना. ठीक है, मज़ा बहुत आ रहा है लेकिन मुंह थक गया है, थक गया. चलो रुक Well, जाओ, I'm very रुक जाओ, sorry. रहने दो, नहीं, रहने पेज दो. पूरा कर लेते हैं ना, और पेज चलो. पूरा करते हैं. हाँ. Well, I'm sorry. I cannot. I find myself just incapable of. किधर गया? 1 second. No, but if you kindly hear for a minute, आगे making you Making understand. you understand. भी तो बोलना था ना, 5-6 डॉट्स हैं. Making you understand what I want to know. My question is that I can from If you kindly listen to my question, I can form my opinion when I know the law. no, I'm not talking about the law. The law is My opinion. Oh, वाकई में मुझे चस्का लग गया, इतना मज़ा आ रहा है. But ये बात खत्म हो जाए ना जरा. वाकई में मुझे चस्का लग गया, इतना मज़ा आ रहा है. But ये बात खत्म हो जाए ना जरा एक दफा. ये वाली. my opinion would be formed on the knowledge of the law, Will you please and not otherwise. let me explain the case again? Jazakallah. Yes. Yes. Huh. Now you have said that if a person announces, declares, proclaims that he is a Muslim, nobody has any right to question his declaration. Quite. Now if a person files a false form, If such a person, no, any person. any person. That is the principle. Yes. Yes. A person can be a Christian or anybody, that declaration cannot be questioned. Now supposing a man files his nomination paper for the office of the President of Pakistan and he says he is a Muslim. He writes there and declares that I'm a Muslim, but some members or voters of Senate or the National Assembly know that he denies certain fundamental of Islam.
And the knowledge and the race. uh, is based on facts which they got to know 2 days ago. There might be a change within those 2 days, these two I'm coming. days. I'm coming to that. I have to explain the whole case. Hmm. Now, after the nomination papers are filed, the date of scrutiny of paper is fixed. They see he is 45 years old. They see he declares himself to be a Muslim, He is otherwise qualified. otherwise qualified on the face of it. Huh. No. Yes. But objection is raised. Huh. No. Objection is raised that he says he is a Muslim, but in fact he is not because he denies certain essentials of Islam. For instance, Zakat, for instance, he says that it is not necessary. I don't believe in it. this institution of zakat should be abolished. Abolished or it never existed. I do not believe in it. Hmm. That is his view. The chief election commissioner asked, is it so? He says, yes, sir, but you are not concerned. You are concerned only with my declaration. I have written, I am Muslim. It is done of your business whether I believe in one tenant or not, or I believe in others or not. What will the Chief Election Commission do? Has he right to interfere or not? What will the members of this house do? Members of the House are not under oath to give evidence, sir. No. No. You are asking. They are supposed to elect or reject. Mirza Saab, you will guide them in such circumstances. You will tell us that in the light of your interpretation of Article 20, the Chief Election Commissioner says, yes, I will have to accept a declaration on the face of it. I have already humbly submitted so many times that these extreme examples, these imaginary examples, cannot solve the problem we are facing today. Let us face facts. I think we will continue after. Mr. Mr. Chairman said, Chairman. the declaration is permitted to withdraw to be in the House at 6 p.m. 6 baje ji. The delegation left the chamber. The chairman, the special committee is बात करनी है जी मौलाना शाह अहमद नूरानी. If you permit me, chairman, जनाबी चेयरमैन, हाँ जी मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी. तो अगली तो वो बात उनकी है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, यहाँ तक ठीक है. बहुत ही आपने मजे की भाई. आपने ये देखा है कि मिस्टर याहिया बख्तियार ने हर पहलू को कवर किया है. किसी आदमी का सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहना, किसी आदमी का मजहब बदलना, किसी आदमी का मुसलमान भी है लेकिन किसी एक फंडामेंटल ऑफ इस्लाम से इनकार कर दिया उसने, और फिर उसने किसी, यानी हर चीज को कवर किया मिस्टर याहिया बख्तियार ने, और एंड पे और उसका ये चेक जवाब. करो खलीफा सालिस की अंग्रेजी चेक करो जरा. वाह. नहीं नहीं, वो भाई जी वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे भाई. बेलियल कॉलेज बताया नहीं आपको? बिल्कुल. ये लेकिन हमने 2 सेशंस कवर किए हैं आज बिलाल, माशाल्लाह. जी हाँ, मेरे तो 3 हुए. हाँ सही बात मेरा है. सुबह वाला भी था. अच्छा, ये तो अभी एग्जांपल्स ही आ रही है. मेरा खुद, मैं कहूँ या अल्लाह, बख्तियार साहब रोक ही नहीं रहे. 16,000 के उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया. तो वाह, अभी असल केस नहीं शुरू हुआ, लेकिन ये बस एक बुनियाद बन रही है. मोहम्मद हुसैन भाई छोड़ दिया यार, आ जाए ऊपर. अरे किधर गए? टॉपिक खत्म करते हैं. उनको श्योर लगता है श्योर श्योर. इसमो अहमद. चलो मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ. मैंने तो पी ली है.
नहीं यार सोनी भाई, पढ़ना मैंने तो समझना। मुकम्मल पढ़ना है, मैंने तो उसको मुकम्मल ही पढ़ना है, क्योंकि जब किसी दूसरे से सुनते हैं ये केस, ये नहीं मैं किसी के ऊपर छोड़ सकता। इवन अमन नजीर भाई की भी बात मैं नहीं इसमें एक्सेप्ट कर सकता। इसको मैंने मुकम्मल पढ़ना है, अकेला पढ़ूं जैसे मर्जी ना ना पढ़ूं। ना, मैंने भी पढ़ना है, मुकम्मल पढ़ना है इंशाल्लाह। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम नहीं कह सकते भाई ऐसी के असम्बली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर चीज का पता होना चाहिए, फिर इसके ऊपर बंदा बात करें। अभी जो अब हमने 50, नेक्स्ट सिटिंग कब करनी है? जब आप कहेंगी इंशाल्लाह। नहीं मतलब आज या कल, मतलब आज आज तो फ्री सानिया हो गए साहब ना? की ब्रॉड लगाई, सानिया साहब की ब्रॉड, ठीक है, सानिया फिर साहब की कल ब्रॉड। करते हैं। हाँ आज डिस्कस कर लेंगे वहां पे कि क्या बात हुई है, आज हमने क्या बात की। बिल्कुल, पता है क्या, डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है पॉइंट्स को, नहीं तो फिर दिमाग से निकलते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। ये जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पे तो मुझे बस यही चीजें मिली हैं इसमें जो हमने ब्रेक के बाद शुरू किया है, कि उसमें सिर्फ एग्जांपल्स ही दी गई हैं, उनको उनके ऊपर बात हुई है। हम्म। यहाँ पे कोई किसी किस्म की बात, अभी तक वो आर्टिकल 20 चल रहा है, राइट ऑफ ट्रेड, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेस और प्रोपेगेट रिलीजन, है सारी यही बातें चल रही हैं अभी तक वही चीज। आर्टिकल टू, आर्टिकल तो टू भी आया था ना जिक्र, और आर्टिकल, 8 और 20। हाँ हाँ हाँ, आर्टिकल 2 में तो था ना कि वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो मतलब इस्लाम सबसे, यानी जो मेन मजहब है पाकिस्तान का वो इस्लाम होगा, इस तरह करके है। एक लेकिन मिनट मैं 1973 के मुस्लिम की तारीफ है वो, सिकंदर मिर्ज़ा से पूछनी है कि वो क्या तारीफ थी। ये राजा साहब प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं या? मैं नीचे जाती हूँ, आ जाएं भाई, ऊपर आ जाएं, शुरू करते हैं। अच्छा बिलाल, मैं ना नॉर्मली, आप इधर हो बिलाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हमारी जी अंग्रेज़ी बाजी। सुन सुन के आप लोग थक गए होंगे, हमारे एक्सेंट सुन Well, सुन के, लेकिन हम क्या करें, शौक ही बड़ा है। look. The accents are perfect. Bilal Hanif is doing a really good job because if you had somebody like me talking, it wouldn't be right because there has to be an accent. Do you understand, Baji? Uh, There has to be an accent because Yahya Bakhtiar had a slight accent, but yeah. मैं आपकी जो परफॉर्मेंस नहीं, जो मिर्जा साहब की परफॉर्मेंस है, मिर्जा नासिर साहब की एक्टिंग, मिर्जा साहब वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑनेस्टली वेरी गुड। वो लिखा हुआ है प्रोसीडिंग्स में ना, लिखा हुआ है बिल्कुल एक एक देखिए चीज़। ये क्योंकि उसमें वो सांस भी लिखे हुए ना, कहेंगे समटाइम्स वो कहते हैं आहा, हाँ हाँ हाँ। जी, जी जी, हाँ हाँ आहा, ऐसे, ये all these things they've written there, you have to play the role. बट मेरे पास वो कस्टमर आ गए थे, क्योंकि मैं शोरूम है मेरी, तो उधर काफ़ी बिजी था, तो मैं थोड़ा स्टेप अवे हो गया, कुछ
So किधर तक पहुंचे आप? हमने दूसरा सेशन कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक So so आज 2 so, सेशन। so you done the first day. आई थिंक अभी फर्स्ट डे में 3 सेशंस होंगे, क्योंकि शाम को 6 बजे दोबारा से मिलने को कहा है चेयरमैन साहब ने। So in your own words, quick summary, 2-3 lines, 2-3 sentences. बुला दे, मैं जो बीच में जो जो बोलूँ। जो पहला सेशन हुआ था उसमें जी एक तो उन्होंने ये पूछा कि उनका इंट्रो लिया। इंट्रो लेने के बाद उन्होंने आर्टिकल 8 और आर्टिकल 20 जो डिस्कस किया था खुतबा जुम्मा में, उन्होंने जी 21 जोन में उसका उनसे पूछा। फिर उन्होंने खलीफातुल मसीह की कुछ डेफिनेशन वगैरह पूछी हैं। उसके जी बाद उन्होंने उनकी सेंसस की रिपोर्ट पढ़ी। वो थी पहले उन्होंने उनका डेजिग्नेशन पूछा ना, कि आपको किस किस नाम से जो बुलाया जाता है, आपका असली नाम क्या है, आपकी जी डेजिग्नेशन जो बताया ना बिलाल ने, जी जी वो था ना बिलाल। जी 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 और अभी उन्होंने कहा था कि लिख कर दे देंगे मिर्जा साहब के बारे में डिटेल, वो पेपर पे देंगे लिख कर, वो उसमें नहीं बताया था। right okay फिर वो काउंटिंग की बात शुरू हो गई थी। जी 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 बिलाल कंटिन्यू। जी जी। उसके बाद उन्होंने मेन जो फोकस उनका रहा यही बख्तियार साहब का, जो मुझे अभी तक मैंने, क्योंकि दूसरा सेशन कंप्लीटली सिर्फ इसी चीज पे था कि राइट ऑफ ट्रेड, राइट टू रिलीजन, इन्हीं चीजों पे था। उन पे उन्होंने एग्जांपल्स दी कुछ, लाइक ट्रेड एग्जांपल्स दी, और कुछ ट्रेड्स की, लाइक एक बंदा कोई इलीगल बिजनेस करता है, या इंडिया के अंदर जो एक कानून है कि आपने गाय को